let's start. So the course is basically the sessions. There will be total 7 sessions per week. For this week, we have 2 sessions. One is today, and the other one is on Thursday. Today, we will cover basically why digital marketing, what happened, how does the digital world grew, and what happened, why it became the need of the hour now, and everybody is working in this sector in one way or the other. And then what is digital marketing actually, and how can you assess your digital strategy, and or maybe if you're planning to develop a strategy. All right, so let's go to the basics. कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो क्यों हमारी लाइफ्स का जो है वो इस तरह से एक हिस्सा बन गया है, एंड वी आर नॉट, हम लोग सोचते नहीं हैं, बट सिंस द डे वी हैव आवर एंड्रॉयड सेल फोन्स इन आवर हैंड्स, तो ये कॉन्सेप्ट तब से शुरू हो गया, बट इसका हाइप पाकिस्तान में स्पेशली कुछ ईयर्स में आया है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिजिटल एवोल्यूशन. So what happened is, like I said, that जैसे digital advancement हुई, हम लोग अपने computers के ऊपर use करते थे, which wasn't always हम लोग computer पे नहीं बैठे होते थे, भाई बहनों के साथ जो है वो 1 hour होता था और एक internet card होता था, so उसका एक specific time होता था, तो उस वक्त इतना ज़्यादा internet use नहीं होता था हमारी lives में. As soon as we started having our own cell phones, और वो उसमें basically we could install Facebook, WhatsApp and everything. तो अब हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है या किसी कोई बारी की जरूरत नहीं पड़ती है. we're always on our cell phones, right? And so हमारे जो patterns हैं वो लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा चेंज हुए, लेकिन कंजम्पशन पैटर्न्स भी चेंज होना शुरू हो गए. थिंग्स वी यूज्ड टू सी ऑन द टीवी, बचपन के एड जो हमें याद आते हैं, जो अभी भी रिपीट होते हैं, डिंग डोंग टाइप के, अब जो है वो चेंज हो गया. अब हम जो है वो या तो वो चीज़ आने से पहले ही हम उसके टीजर्स जो हैं वो ऑनलाइन देख चुके होते हैं और वी नो कि अच्छा ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, एंड बाय द टाइम हम उसको टीवी में देखते हैं, हम वी वुड नो कि अच्छा ये अवार्ड्स आ रहे हैं, ये इस ड्रामा का ये टीजर ऑलरेडी हम पहले देख चुके होते हैं, व्हाटएवर, राइट? सो हमारे जो हर चीज़ को कंज्यूम करने के पैटर्न्स, नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इवॉल्व हो गया. एंड दैट इज वाई जब हम बिजनेस की तरफ आते हैं तो हमारा बिजनेस जो है वो भी अफेक्ट हो गया है, in a sense के initially we used to walk into the stores, right? Especially for the products, like for us women, clothing के लिए we used to walk in. Now we are always on the internet, and हम लोग आराम से websites access कर सकते हैं. We can order online. If you don't want to order online, at least we know कि अच्छा यार, we compare the prices, we यहाँ पे sale लगी हुई है and all of that, so we have all the information beforehand. So businesses का भी हमारा consumption pattern change हुआ है, तो business का जो है उनका तरीका change हो गया sales करने का या lead generate करने का. वो सिर्फ अब अपनी shops पे बैठ के इंतजार नहीं करेंगे customers का. They know कि अगर and I will tell you कि how many users in total are using the internet at the moment. जो research में बताती है, तो उस पे आप लोगों को पता चलेगा कि बिजनेसेस भी कहेंगे कि अच्छा हाँ नहीं, हमें ऑनलाइन जाना है ताकि हम वहाँ से कस्टमर को ग्रैब करके ले आए. मे बी ऑनलाइन ले आए, मे बी वी विल इन्फ्लुएंस देम कि वो हमारे क्या कहते हैं, हमारी शॉप के ऊपर वॉक इन करें. सो दैट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड कि मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो रीच कितनी बढ़ गई है हमारी, एंड हमारी कम्युनिकेशन किस तरह इवॉल्व हो गई है, फ्रॉम लेटर्स टू फोन्स टू PDCL के फोन्स होते थे, एंड नाउ थ्रू एकदम से जब सेल फोन्स आए, सो मैसेजेस वाज द चीपेस्ट सोर्स. टेक्सटिंग शुरू हुई और फिर अब कॉल्स भी बहुत ज़्यादा वो हो गई हैं, एंड देन व्हाट्सएप ने तो सब कुछ ही आसान कर दिया है. सो आर कम्युनिकेशन हैज ऑल्सो इवॉल्व्ड एक और तरीके से भी, बिकॉज people used to feel comfortable with calling friends and everything. अब जो है
they've grown, I feel they've grown more introvert के यार text कर लेते हैं, calls जो है वो थोड़ी सी लोगों को anxious करती है कि एकदम से call उठानी है या क्या जवाब देना है या whatever. So that has also changed, it has also changed our personalities with the passage of time. So yeah, that's basically the crux is that online interaction जो है उसने हमारे traditional ways of interaction को change कर दिया है. So now let's understand customers. Like, you know, अब digital evolution तो हो गई है. अब हम customers के perspective से इसको देखते हैं कि customers जो हैं, they are now more informed and have more choices, right? You know all of the brands and you'll go on that, or you know कि अच्छा किसका कब, अब for instance winter stuff आ रहा है तो किसका कब आ रहा है, sales किसकी end of season sales खत्म हो गई हैं या भी चल रही हैं last minute sales, yeah, things like that. You know, you're now more informed than like सबको surprise मिलता था किसी भी you know shop पर जाकर कि अच्छा यार यहाँ पे तो डिस्काउंट है या whatever. Even salons में या जो भी है इसमें weekend packages निकल रहे हैं या whatever. And then with the advance of digital customers, expectations have also changed. हमारी expectations change हो गई हैं. In what sense? That we expect everything to be online. हम सबसे पहले search करेंगे अच्छा कि online है या सबसे पहले हम Google पे जाएंगे और उसका नाम लिखेंगे कि is it available? The website is available. Any social media page, right? Even for restaurants हम सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा, especially in COVID times कि अच्छा indoor outdoor dining है तो let's before calling let's just see कि वो social media पे मैंने ये चीज़ announce किया है कि नहीं है, उनके pages हैं कि नहीं. So we expect all services and products to be online. इसके अलावा हमें instant results चाहिए होते हैं, ठीक है, कि we want variety and also we want it faster. So for instance के अगर हम restaurants की बात कर रहे हैं, so food chains की बात करें, अभी we have Food Panda for instance, right? So हम देखेंगे कि अच्छा हाँ यार आज हम क्या order करें, right? So we expect more of the options, right? And किसी specific restaurant से भी हम कहेंगे कि यार इसका taste अच्छा है, इसमें ये और भी options हो सकती थी. And we also expect it faster in a way कि हमें ये जल्दी जो है वो चीज़ मिल जाए. We order online तो हम देखते हैं कि इसका 10 to 14 business working days हैं, but जिसके 3 to 5 हैं we'll उसका भी एक you know एक point हो जाएगा कि 3 to 5 हैं तो we will probably compromise on maybe cost or quality or whatever based on our needs और हम 3 to 5 को prefer करेंगे. So ये सारी चीज़ें हैं जो हमें understand करनी पड़ती है जब हम customer के perspective से देखते हैं, और जब हम उसको मतलब feel करेंगे ना, जब हम उसको understand करेंगे तो हम अपनी as a, you know I will consider all of you as a future digital marketing leaders, women leaders or officers जो आप लोग join करोगे, तो हमें उसका कस्टमर जो है बेसिकली उसको एनालाइज करना है कि वो क्या चाहता है, ठीक है. तो और उस हिसाब से हम if you're working anywhere or if you are planning to work anywhere, हम देखेंगे कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, राइट, और वो किस तरह से उनके टारगेट कस्टमर्स कौन है बेसिकली, और वो किस तरह की सर्विस जो है वो जा रहे होंगे. एंड ऑल्सो दे वांट ओवरऑल एक्सपीरियंस, जो उनका यूजर एक्सपीरियंस है वो इंट्यूटिव हो, लाइक यू नो वो एक यू नो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग ना हो उनके लिए कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड. फ्यू वेबसाइट्स समटाइम्स या फ्यू पॉलिसीज और ऑर्डर करने का तरीका इतना मुश्किल होता है कि लोग उससे बैकआउट कर जाते हैं, राइट. Initially people don't used to trust credit card की payments, तो cash on delivery आ गया for instance, right. और इस तरह की चीज़ें, या वेबसाइट आपकी इतनी मुश्किल होती है कि it's very difficult to find out actually कि हमें क्या कहते हैं add to cart कहाँ पे जाके करना है, या हमें अपनी प्रोडक्ट जो चाहिए उसको ढूंढना कैसे है. So you make it as simple as possible कि एक आम बंदा भी जाके उसको अंडरस्टैंड कर सके और वो उसके लिए इतनी फ्रेंडली हो के आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जो है वो ऑन स्पॉट सेल आउट हो सके. Otherwise they'll move on to another side and उनका काम पूरा हो जाएगा. That's not a problem. So what has this digital evolution done, right? It has shifted the power in the hands of the customers basically, कि अब power आपके हाथ में नहीं है कि आपका customer walk in करेगा आपकी business के ऊपर, आपकी organization के अंदर या आपकी shop के अंदर
और आप जो है उसको एट दैट मोमेंट एक अच्छा सा ट्रीटमेंट दे के और वहीं पे जो है उससे निगोशिएट करके आप डील डन कर देंगे। नहीं, अब वो कस्टमर आपको 24/7 कहीं पर भी रीच आउट कर सकता है और वो देखेगा कि आप उसका एक्सपीरियंस कैसा है, आपके प्रोडक्ट्स कैसे हैं और आपकी सर्विस कैसी है, एंड देन ही उसके पास ही क्रेडिट ज्यादा है कि वो अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकता है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं सो प्लीज लेट मी नो। सो नाउ यू हैव टू think about yourself as well. एक दफा हम अपने आप को एनालाइज करते हैं कि डिजिटल एवोल्यूशन जो है वो हमारे परचेज पैटर्न्स को कैसे चेंज करेगी। आई थिंक पहले हम सीजनल शॉपिंग करते थे, फॉर इंस्टेंस इफ इट्स फॉर मी, ठीक है, कि हम सीजनल जाते थे और लिया और एक ही दफा गए और जो भी चीज़ जरूरी चीज़ है वो खरीद के आ गए। अब वी आर ऑल टाइम हम लोग जो है वो इंटरनेट के ऊपर होते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा यार बेस्ट डील कहाँ से मिल रही है, सो मे बी वी नॉट यूजिंग इट दिस सीजन, वी कैन यूज इट नेक्स्ट सीजन में। बिजनेस ने ये चीज़ यूज किया बेसिकली, ये अपॉर्चुनिटी। तो आप बेसिकली अगर आपने 5,000 खर्चना है तो आप मे बी 10,000 खर्च रहे होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर आपने एक बजट एलोकेटेड है आपकी, या मे बी अगर आपका एक बजट एलोकेटेड था फूड फॉर इंस्टेंस, ठीक है, एक बहुत ज्यादा कॉमन वो है कि पहले हम घर से प्रेफर करते थे, यू नो, वी यूज्ड टू ब्रिंग लंच बॉक्सेस, उसमें सारा घर का खाना ये वो। अब कभी हमारा दिल चाह रहा होता है और कभी जो है वो ऐसी ऑफर्स निकली हुई होती हैं या फूड पांडा आपको बार बार नोटिफिकेशंस भेज रहा होता है, तो आप जो है उसको इवेंचुअली यू एंड अप ऑर्डरिंग इट, राइट। सो इस तरह से हमारे परचेज पैटर्न्स जो है इवॉल्व हुए हैं। How you buy now versus how you bought a couple of years back, that's I've also explained. Have you noticed any changes in your purchase patterns? So what are they? ये आप लोगों ने भी सोचना है, right? You know, it's एक ये अंग्रेजी में लाइंस लिखी हैं, but you also think about it, because जब आप इसके बारे में सोचोगे तो आप सोचोगे कि सिर्फ आपके नहीं चेंज हो रहे purchase patterns, ये लोगों के भी चेंज हो रहे हैं, and that is where the business opportunity lies, right? That is जब भी बड़े बड़े giants जो हैं वो सोचते हैं बैठ के और वो ये डिजिटल एप्लीकेशंस निकालते हैं, so basically they're thinking कि अच्छा यार नीड कहाँ पे है, या इस कस्टमर या इतना बड़ा टारगेट बेस है जो घर से ही खाना खा रहा है, तो चलो हम जो है किचन बंद करवा देते हैं, राइट। सो थिंग्स लाइक दैट, और फिर दैट इवेंचुअली एंडेड अप इन अ बिजनेस आइडिया और यू नो बेसिकली अ बिजनेस ग्रोथ, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू अर्न। सो डिजिटल डेवलपमेंट जो है, अब आप देखो कि so purchase patterns has changed and how the digital growth has happened. Mobile devices now account for over 50% of web page views worldwide. If you have websites for that, you would know कि अब लैपटॉप से हम जो है या हम कंप्यूटर डेस्कटॉप से हम मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर जा रहे हैं। I do a lot of analysis on Google Analytics and the websites I manage, उसमें यही है कि हमारे लाइक फॉर वन ऑफ द वेबसाइट हमारे 75% ऑफ द यूजर्स आर जो है वो मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं। इन अर्ली 2020 व्हिच इज लास्ट ईयर, द टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स, लाइक जिन लोगों के पास इंटरनेट था वर्ल्ड वाइड, वो 4.5 बिलियन थे, राइट। एंड उनमें से जो लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे थे दे वर 3.2 बिलियन, राइट। सो दीज आर द पीपल जो वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया यूज करते हैं, राइट। ऑल ऑफ द बिजनेसेस हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू बेसिकली यूज देयर टाइम इन योर इंटरेस्ट, राइट। और वो हमें किस तरह करना है, दैट बिकम्स योर स्ट्रैटेजी, योर बिजनेस आइडिया। When you'll keep yourself into the customer shoes, you know कि उनको क्या फायदे हुए हैं या उनकी क्या needs हैं या क्या gaps रह गए हैं। And also as future digital marketing officers या consultants या experts, right, कि हम उस customer के जो benefits हैं वो हम अपनी organization में या अपनी digital marketing strategies के through किस तरह उनको provide कर सकते हैं या उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। So online interaction जो है, it is available anytime through web, email, social media, and then easier accessibility हो गई है through mobile devices, faster interaction हो गया है, instant communication, right? You know, I don't remember the name, but when yesterday I emailed, तो मुझे रात को email आई कि if
these sessions can be done in the evening, right? So and I'm sorry I couldn't able to respond if you're one of them, but morning times are generally like feasible for most of us. So that is why, but but this is like you're available anytime. आपको कोई जरूरत नहीं है कि अब आप वेट करोगे अगले दिन का या आप कंप्यूटर का वेट करोगे. You just pick up your cell phone and you ask your question. Digital interactions are cheaper, which is also call की cost नहीं होती है. You don't have to walk in. You just pick up, you just like write a message or email or उसकी कोई, it's not costly. Although internet charges होते हैं, but उस तरह से जब वो over the month आप उसको divide करते हो तो वो उतने नहीं होते as compared to जो हमें call charges या even few charges पड़ेंगे when you walk into any shop. Digital interactions are easier to link to records and receipts, right? So email की एक track है, phone का एक track है. अगर कोई आप कहीं से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उसकी रिसीट आपको साइमल्टेनियसली आ जाती है और वो आपके ईमेल में सेव रहती है. यू कैन ऑलवेज गो बैक टू इट. सो इट्स आपकी जो है वो एक ट्रैकिंग ईजियर हो जाती है. कस्टमर्स आर मोर इन्फॉर्म्ड, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड के हाउ. They have more choices, that also I have explained. They know all the brands. They can go and they can search for and evaluate products and service online before buying, right? So what is the challenge and here, and what is the business opportunity? We'll make that challenge a business opportunity. So the challenge for businesses is to understand and develop the content to help customer in their decision making process. Like you have, हमें जो है अपना digital marketing का बहुत बड़ा जो एक crux है ना, वो content है कि आप अपना कंटेंट ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो और इतना कन्विंसिंग वे में प्रेजेंट कर रहे हो कि आप कस्टमर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, राइट? एंड सो व्हाई इज दैट? बिकॉज द अमाउंट जो एक कंज्यूमर सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है, इट्स इंक्रीजिंग. एंड ऑन एवरेज लाइक अ सोशल मीडिया यूजर, all of us basically on average spend 2 hours a day on social media. And they're saying that if you are you average it over your lifetime, it is around 5 years and 4 months, which is even more than an average person spends eating over their lives, right? Like आप जितना खाने पे आप टाइम नहीं स्पेंड करते, उससे कई ज़्यादा 5 years and 4 months अपनी ज़िंदगी के आप सिर्फ सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं. There are two things. एक, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, like as a digital marketing officers, and also दूसरा कि अगर even if you're using it, use it productively. आप वो 5 years ज़िंदगी के वेस्ट ना करें सिर्फ स्क्रॉल डाउन करने के लिए. So how can you use customers' time for your benefit or business growth? That's a business opportunity, and that's what we need to think. So what should be your goal? Your ultimate goal is to drive more valuable actions. हम क्यों आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर? To have contact requests, for instance on LinkedIn हम लोग networking करते हैं to generate more leads अपने product की, अपनी services की, और फिर उन leads को हम generate करके फिर उनको call करते हैं ताकि they ended up being we ended up resulting into sales and revenues. But उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप customer को एक ऐसा user experience दो कि जिसमें start से लेके end तक कोई glitch नहीं हो. Basically you create that kind of a user experience जहाँ पर आपके जो potential customer हैं they end up doing business with you. A good rule of thumb is to create a user experience that is intuitive, right? जो आप like एक flow में चल रहा हो and personalized हो, so users can find you easily, search on your website, can easily buy or contact you, right? So अच्छा, customer experience के साथ ना एक और term आती है, user experience के साथ customer experience, which is कि आप सिर्फ product की usability को target नहीं कर रहे होते हैं, आप customer को overall एक ऐसा पूरा एक ऐसी service provide करते हैं कि he's like happy with you in all forms, right? If a purchase is made तो आप web के through तो आप उनको एक बहुत अच्छी web experience दे रहे हैं, आप फिर उनको email कर रहे हैं कि और product जो है वो deliver हो जाएगी, ये वो deliver हो जाती है, तो फिर आप उनको अपने brochures या newsletters में शामिल कर सकते हैं और additional support या service provide कर सकते हैं, right? So for instance अगर आप as a graphic designer आप कह लो, right? Although I know they always like customers ask for changes and everything, but आपकी वैल्यू एडिड क्या है, राइट? एक 2 ग्राफिक डिजाइनर हैं, आई वुड ऑलवेज सी कि यार मुझे इससे ये वैल्यू एडिड मिला. व्हाट इज दैट वैल्यू एडिड? दैट वैल्यू एडिड इज कि दिस पर्सन मे बी फॉर मी वो प्रॉपर रिसर्च करता है, ठीक है,
ये नहीं कि उसके दिमाग में एक डिज़ाइन आया, उसने बनाया और ख़त्म हो गया। वो प्रॉपर रिसर्च करता है कि यार इस तरह के कंटेंट के ऊपर इस तरह की चीज़ अच्छी लगेगी, या वो मुझे 2 ऑप्शंस देता है हर दफ़ा। वो मुझे 2 ऑप्शंस देता है कि अच्छा ये भी एक पोस्ट की ऑप्शन है, ये भी एक पोस्ट की ऑप्शन है, राइट? सो दीज आर वैल्यू एडेड सर्विसेज। या फिर डिज़ाइनर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हाँ उन्होंने बना दिया एंड दैट्स इट, राइट? थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज होते हैं। सो दे आर सीइंग थ्रू देयर लेंस कि यार ये चीज़ अच्छी लगेगी, और जो यूजर है, आपका कस्टमर है बेसिकली, वो किसी और लेंस से देख रहा है। तो हम ये चीज़ रियलाइज नहीं करते हैं कि फॉर इंस्टेंस वो कलर स्कीम शायद मुझे पसंद नहीं आ रही है, पर आपको बहुत अच्छी लग रही है कि यार आप लोगों ने जो अपना आर्ट्स और वो सारा पढ़ा है कि ये फॉन्ट्स होने चाहिए, वो होना चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट वो। बट मैं ऑनलाइन अगर देखती हूँ चीज़ों को कि मुझे क्या चीज़ ग्रैब करती है, उस तरह से मुझे ये डिज़ाइन ग्रैब नहीं किया, राइट? सो थिंग्स लाइक दैट, ये आपका पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस होता है कि एट द एंड ऑफ द डे योर कस्टमर इज हैप्पी। तो इट focuses on how the customer is made to feel rather than just product usability or service usability. So what are and how do you measure, right? You know, there are some of the important key facts कि आप customer experience को measure कैसे करते हो, and whatever your product is or whatever your service is or whatever you're planning, whenever you're employed somewhere, तो एक चीज का ख्याल आप लोग रखें कि customer reviews बहुत important होते हैं। अगर आप किसी के लिए एज अ डिजिटल मार्केटिंग ऑफिसर्स भी काम कर रहे हैं, गो टू देयर वेबसाइट्स, गूगल एंड सी के उनके कस्टमर रिव्यूज कैसे हैं। अगर उनके अच्छे नहीं हैं तो उनको गाइड करें, या उनके कुछ लोगों के बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको गाइड करें कि यार आस्क योर कस्टमर्स टू रिव्यू मोर अबाउट यू, राइट? सो अकॉर्डिंग टू स्टडीज, कंज्यूमर्स आर लाइकली टू स्पेंड 31% मोर ऑन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिनके एक्सीलेंट रिव्यूज होते हैं। दे ऑलवेज सी रिव्यूज। And 85% of customers trust online reviews as much as a personal recommendation, right? You know, कि अगर मैंने कोई business कोई service use किया, कोई product मैं आप लोगों को बता दूँ, that's a personal recommendation. And then if I go on Google and I see a lot of reviews, तो उनका average निकल आता है basically कि अच्छा यार ये 4 है या 4.5 है, you would know eventually. तो वो आप as a personal recommendation उसको लेते हैं। Negative reviews हमेशा customer को भगा देते हैं। 86% of potential customer will not purchase a product अगर वो negative reviews देखते हैं। पाकिस्तान में ये सब कुछ अचीव करना बहुत ही हार्ड है एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट। तो फिर यहाँ पे तो फेक जो है कमेंट्स भी जनरेट हो रहे हैं, फेक पोस्ट। हाँ, बट यू नो सी उसके ना एवरेज वही बात है कि एक तो आपके नंबर ऑफ रिव्यूज होने चाहिए और फिर उसका एवरेज, राइट? सो फॉर इंस्टेंस इफ आई अगेन आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ फूड पांडा, ठीक है? अगर मुझे कुछ ऑर्डर करना होता है, मैं सबसे पहले उसके रिव्यूज देखती हूँ। अब जो है, अब जिसके 14 रिव्यूज हैं और उसके 14 ही रिव्यूज 4.5 की रेटिंग के आ रहे हैं, सो आई वुड नो कि अच्छा यार अभी वो अपने जानने वालों में भेज रहा है और वो उनको कह रहा है कि यार अच्छे रिव्यूज दे दो, राइट? बट जिसके 1000 प्लस रिव्यूज हैं, राइट, और उसने आज भी ऑर्डर किया, किसी ने आज किया, किसी ने कल किया, किसी ने परसों किया, सो आई वुड नो कि अच्छा उसमें ये भी लिखा होता है कि इनका कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है या कौन सा मेन्यू का आइटम इनका अच्छा है, राइट? सो यू मे एंड अप इवेंचुअली ड्राइंग दैट। देखूंगी कि पिछले 5 दिन का रेटिंग आ रही है तो मैं कहूंगी यार इसके लिए एसेंशियली इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यू वुड सी, आपको एक गट फीलिंग भी आ जाती है और इवेंचुअली यू आल्सो ट्राई। बट बिजनेस सर्विस बिजनेस के लिए, फॉर एग्जांपल यू एज अ ग्राफिक डिजाइनर, इट्स अ लिटिल हार्ड, but you know on LinkedIn for instance, if you have a profile, or on Behance, I don't know about Behance कि वहाँ पे reviews लोग दे सकते हैं, but LinkedIn में recommendations चल रही होती हैं, right? And then there's a lot of other things, your history or your work experiences और portfolio तो आपकी खुद से है, but again वही बात है कि how would you know eventually कि वो आपने बनाया नहीं बनाया? But there's always, you know, a trade-off between a short-term and a long-term thing, right? if अगर आप eventually you will end up doing a short-term, वो आप कर भी लोगे, प्रोडक्ट बेच भी लोगे या सर्विस बेच भी लोगे, तो एक वन ऑफ टाइम कोई धोखा खा जाएगा, बट वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप लॉन्ग टर्म बिजनेस में रह नहीं सकेंगे। The next point is when negative reviews pop up on Google searches, business can lose up to 70% of future customers। जो आपके अभी कस्टमर्स बने ही नहीं है, अगर आपके नेगेटिव रिव्यूज शो हो रहे हैं तो 70% जो है वो बैकआउट कर जाएंगे कहीं पे। सो आप लोगों की क्या जॉब है? आप लोगों की जॉब ये है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ यूज ऑफ सोशल मीडिया, राइट? कि सोशल मीडिया जो है वो कैसे हम यूज करें, व्हाई? ताकि आपका अपना बिजनेस है या व्हाटएवर सर्विस यू हैव और प्रोडक्ट यू हैव, या आपके एम्प्लॉयर का एक पॉजिटिव इमेज जा रहा हो,
right? And how can you create that? So for instance, firstly check your online reviews, your recommendations and everything. आप किसी grad college में भी apply करते हैं ना, वो सबसे पहले recommendations मांगते हैं, right? Recommendations are everywhere must. It's not just कि आपको social media के लिए चाहिए या अपना business के लिए चाहिए. And then celebrity endorsements या influencers, you know, a lot of everybody like influencers is so common these days. So that's, you can, if you have a friend या अगर आप कोई किसी को request कर सकते हैं कि at least they can put something in their stories, if not a post or something like that. और आपके जितना भी effective जो भी आपका audio है या visuals है, आपकी photography है, आपका design है, whatever portfolio you have, वो visually जो है वो इतना इंस्पायरिंग होना चाहिए. अब मेरे पास बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स के सीवीज आते हैं और बिहाइंड्स के ऊपर होते हैं. एंड यू नो, अगर किसी ने बिजनेस कार्ड अपलोड किया हुआ है, सो इट्स देयर हैज टू बी, उसके कोई मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए, राइट? उसमें आप लोगों का एफर्ट नजर आना चाहिए. ये नहीं कि आपने एक डिज़ाइन पकड़ा या बहुत बेसिक डिज़ाइन लिया वो डाला. यू रिसर्च ऑन 3 or 4 डिज़ाइंस. आप बैठो 3-4, लाइक यू नो, अपने पोर्टफोलियो को टाइम दो एंड आप लोग देखोगे कि पीपल विल स्टार्ट अप्रोचिंग यू इवेंचुअली. या मतलब मैं देखती हूँ पोर्टफोलियो, सबसे पहले देखती हूँ एंड इफ आई सी कि अच्छा यार ये तो काम नजर आ रहा है, राइट? या स्पेशली दोज गाइज जिनकी ग्रेजुएशन डिजाइनिंग में नहीं होती है, उनको वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छा बेसिक ट्रेनिंग लैक कर रही है. पर अगर वो पोर्टफोलियो से कवर हो रही है तो व्हाई नॉट? सो यू हैव टू इम्प्रूव योर पोर्टफोलियो. एंड सिमिलरली लाइक जो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं उनका लिंक्डइन बहुत प्यारा होना चाहिए, राइट? या उनके रिज्यूमेस बहुत अच्छे होने चाहिए. आई हैव रिसीव्ड रिज्यूमेस अभी इस कोर्स के लिए भी. मैं देख रही थी कि लाइक यू नो बेसिक फॉर्मेटिंग इश्यूज हैं उसके अंदर, या उसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन मिसिंग है. You know, if you're looking for a job, if you're a candidate seeking job, आप भी अपने आप को एक तरह से मार्केट ही कर रहे हैं. So what, and your employers are your customers basically. So उनको आपसे काम चाहिए, उनसे आप सर्विस चाहिए. आप किस तरह अपने आप को सेल करोगे? It's always how you sell yourself. Initially it was जब इंटरव्यूज में लोग जाते थे कोविड की वजह से, lot of things are remote, so you have a choice, but the first is कि आप एक रिज्यूमे भेजो, उसके साथ एक खूबसूरत कवर लेटर लिखो. लोग बगैर सब्जेक्ट के, बगैर बॉडी के सीवी भेज देते हैं एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट, राइट? मैम एक है कि आप सीवी और कवर लेटर का बोल रहे हैं. हमें मतलब मैं खुद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मैंने एमसीएस किया है, लेकिन हमें भी ये चीज़ें नहीं सिखाई गई. हमें यही बोला गया कि इंटरनेट से कनेक्ट करें. ऑब्वियसली फ्लॉज रह जाते हैं अगर आपको गाइडलाइन देने वाला कोई भी ना हो, तो वहाँ ऐसा बंदा क्या करे? बिकॉज वेयर आई लिव यहाँ पे मेरी फैमिली मेन है कि जहाँ पे हम यूनिवर्सिटी तक गए. and I'm aiming to get more you know about my career and I understand that कि यूनिवर्सिटीज में आपकी करियर डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो आई थिंक चलो आप एक कोर्स नहीं रखते, बट एट द एंड ऑफ लाइक इन योर फाइनल ईयर कोई ना कोई सेशंस होने चाहिए जो आपके करियर डेवलपमेंट में हेल्प करें. So a few universities they share templates, लेकिन वो सबके ही सेम हो जाते हैं फिर templates, right? So the others don't, but there's always good cover to reach out to people in terms of like you know आप mentors ढूंढें, या even if you research on the internet, you will eventually find a few resumes और उसको आप tweak कर सकते हैं. But or mentors, you know, for females, it's our society generally आप हर किसी को जाके नहीं कह सकते हैं because social media पे trust करना it's another thing. But it's always I don't know. So for instance, our internship program is basically what I want the fresh graduates to learn about basic things. The people जिनका मैं इसलिए भी शॉर्टलिस्ट कर लेती हूँ कि यार ये आएंगे तो सबसे पहले इनका सीवी ठीक कराऊंगी मैं. तो and then you know some people walk in, some actually don't. वो लगता है कि सीवी से सीरियस नहीं लगे तो वो they won't reply.
So यस मैम, मैम अगर आपके पास टाइम हो तो आप मेरा जरूर चेक करिएगा। जरूर कवर आपने अटैच किया था? यस मैम। ठीक है, आई विल डू सो।